हिंदी सिनेमा के अगर आप बहुत हल्के फुल्के दर्शक हैं तब भी गोविंद निहलानी का परिचय देने की जरूरत अलग से किसी को नहीं है, जिसने आक्रोश, अर्धसत्य, पार्टी, आघात, तमस, दृष्टि, कर्मयोद्धा, विजेता, द्रोहकाल, संशोधन, 1084 की माँ, देव, तक्षक, ये उनकी फिल्में हैं जो उन्होंने निर्देशित की हैं। और इसके सिवा बहुत सारी फिल्मों की उन्होंने पटकथाएं लिखी हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत श्याम बेनेगल जैसे सिद्ध निर्देशक के साथ उनके सहायक के रूप में की, लेकिन जैसे कि बाद में बहुत एक कहावत चलती है ना कि गुरु गुरु रह गया और चेला आगे निकल गया, तो ये कोई तुलना की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को और अपने श्याम बेनेगल का नाम भी बहुत बहुत आगे बढ़ाया अपने कामों से। और अपना तो खैर उनका नाम, मैं शब्द कम है उनकी फिल्मों के लिए, बहुत शुरुआत से ही मैं उनकी फिल्मों का गहरा प्रशंसक रहा हूँ। उन्हें 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, अनेक अनेक बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि वे भी थोड़ी देर में हमारे बीच में होने वाले हैं। और उनसे बात करने के लिए अतुल तिवारी जी को होना है, जो चित्त से नाटककार, नाट्य निर्देशक, पटकथा लेखक, संवाद लेखक, एक संकोची अभिनेता रहे हैं और कई कई तरीके से तमाम तरह की सांस्कृतिक गतिविधियों से, सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जब से मैं बम्बई आया हूँ यहाँ पे 88-89 से, तब से अगर आप कहीं किताबों की दुकान में जाते थे तो वहाँ पे 2-3 फिक्सचर होते थे, जिनमें एक गोविंद निहलानी जी अवश्य होते थे, महेश भट्ट साहब भी होते थे और भी बहुत से लोग होते थे, सईद मिर्ज़ा साहब होते थे और कई लोग होते थे। लेकिन एक फ़र्क था कि महेश भट्ट साहब और सईद मिर्ज़ा साहब आपको सिर्फ अंग्रेज़ी की दुकानों में दिखाई देते थे, जबकि गोविंद निहलानी जी आपको हिंदी की पुस्तक की दुकानों में भी दिखाई देते थे, मराठी की पुस्तक की दुकानों में भी दिखाई देते थे और इंग्लिश की पुस्तक की दुकानों में भी दिखाई देते थे। तो किताबों से जो गोविंद जी का नाता है वो इस चीज़ से भी जुड़ता है कि गोविंद जी ने जो 18 फिल्में अपने जीवन में बनाई हैं, एक से एक बढ़ के क्लासिक, उनमें से लगभग आधी वो किताबों पे, कहानियों पे, नाटकों पे आधारित है। जबकि शहर में काफ़ी ट्रेंड ये है कि चलो हम नया ही कुछ लिखते हैं, भले आइडिया कहीं से ले लें लेकिन नया ही लिखते हैं। लेकिन नया लिखें, हम स्क्रीन पे नया लिखें, लेकिन क्यों ना उसको हम किसी एक बहुत ही ठोस आधार पे, साहित्यिक आधार पे कायम करें। और गोविंद जी ने हमेशा अपनी फिल्में एक ठोस साहित्यिक आधार पे कायम की हैं, चाहे वो हिंदी के उपन्यास हों तमस जैसे, चाहे वो मराठी की कहानियाँ हों, चाहे मराठी के नाटक हों, चाहे विदेशी नाटक हों। लेकिन गोविंद जी ने हमेशा ठोस साहित्य की बुनियाद पे अपनी चीज़ें बनाई हैं। तो गोविंद जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब सिंध छोड़ा आपने 7 साल की उम्र में और सिंध छोड़ के भारत आए, तो उस समय तक क्या आपकी रीडिंग में हिंदी किताबें शामिल थी या केवल सिंधी ही पढ़ते थे आप? कि सबसे पहले मुझे याद है कि बुक दैट आई रेड इन कराची, वाह, when I was around 5 or 6 years old or something like that. I remember the book, and I remember the title of the book, and also remember how much I liked the book. जी, The first book that I read, which was given to me by my father, which was published, it was a book. And the book was called Mahabharat. So it started with that. And my memory is not that strong because I was very small. But the fact is, I could read the book very well because my father had already taught me how to read Hindi. Though we are Sindhis, but my education started with Hindi. That is also I discovered a little later that my father and my family in Sindh, in the area, the village that I come from, Sindhi,
that was gumbat. It was called gumbat. And our family also had a school which was run by our family. It was a school which taught संस्कृत. उस वक्त इसको बहुत अच्छा माना जाता था एंड माय फैमिली, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि उसके बाद इमीडिएटली द पार्टीशन टुक प्लेस. इट वाज द टाइम व्हेन द पार्टीशन वाज टेकिंग प्लेस, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ टर्मोइल in our family too. I could not get the details of that, but I saw at that moment that the forms that were distributed among the students for the school that was run by us, but beyond that, I do not remember anything. But the fact I want to emphasize on that even from a very young age, I was introduced to reading. And the language that I read was Hindi. और फिर राजस्थान आने के बाद तो फिर ज़्यादा ही हिंदी से, राजस्थान जब आप लोग चले आए वहाँ से, सिंध से और उदयपुर के आसपास के इलाकों में, तब तो ज़्यादा हिंदी से और जुड़ाव बढ़ गया होगा आपका, हिंदी से, हिंदी किताबों से. एंड I could read Hindi even before I went to school, because Hindi was taught to me by my father. And by him, there was no teacher. I was one-to-one with my father. I don't know how it happened, but it happened. But once I knew that once I started reading Hindi, and the first book that I read was Mahabharata. That time I can think of now was a very strange time, because everything was new to me. But what I remember is what I read in Mahabharata, I found it very exciting. As a child, 6 or 7 years old. What else I could remember? I don't know. But I remember one thing, that in terms of drama, I got the full feeling after reading the book in Hindi in written form, and I felt it was very exciting. I found it very exciting. I don't know what the exact story was, but whatever I read and whatever I saw in that book, it was in, some illustrations. So I remember that what I was reading was very exciting. It was exciting me, particularly something about some Ranbhumi and some, now what I recall as war, about two armies fighting each other and things like that. Very little, I mean, you can't call it memories. It was very, 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 गोविंद जी, I आपने was too. जी That's all I remember. जी That's जी how I started it. जी 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 गोविंद जी, मैं कह रहा था कि आपने जो बात कही कि उसके बाद तो फिर पार्टीशन हो गया और सब कुछ उथल पुथल हो गया और आप लोगों को कराची से चल के राजस्थान आ गए आप लोग और वहाँ रहने लगे आप लोग. ये जो उथल पुथल जो तो आपने देखी, ये जो महाभारत आपने पढ़ी बचपन में, और वो पढ़ने के साथ ही साथ एक महाभारत आपने देखी भी कि जो दो भाइयों के बीच में जो महाभारत में हो रहा था, एक कुनबे के बीच में जो महाभारत में हो रहा था, वही आपने देश में होते हुए देखा.
जो भी हो बचपन में उखड़ने की कुछ ना कुछ तो यादें होंगी। और मेरे ख्याल से अगर मैं अतिशयोक्ति शायद नहीं बोल रहा हूँ कि गोविंद निहलानी का सारा सिनेमा एक तरफ और तमस एक तरफ तराजू में, और तमस में शायद उन्हीं यादों को, जैसे तमस लिखने के बाद में भीषम साहनी जी ने कहा कि छोटे छोटे नोट्स जो मैंने तब बनाए थे और बाद में भी उनको रिवाइव किया रोते रोते, और फिर वही सब तमस में गया। तो तमस एक पुस्तक को लेकर के जितनी ईमानदारी से बनाई गई एक फिल्म है, और इतना बड़ा काम 6 घंटे की एक फिल्म जो आपने बनाई सारे विरोधों के बावजूद, और मेरे ख्याल से अगर आपने तमस देखी हो पढ़ी हो तो जितनी ईमानदारी से बनाई गई, अगर तमस का पहला पन्ना आप खोलें तो सुअर की चिचियाती हुई आवाज़, एक आला उसके अंदर रखा, एक दिया, उसको एक सुअर को दौड़ाता हुआ एक आदमी मारने की कोशिश करता हुआ आदमी, जिस तरह से लिखा है भीषम जी ने बिल्कुल उसी तरह से फिल्माया है अधिकतर चीज़ों को। नेचुरली उपन्यास को टेलीस्कोप करना पड़ता है, काटना पड़ता है, लेकिन इतनी ईमानदारी से किसी साहित्य को बहुत कम फिल्म मेकर्स ने बरता है जैसे आपने बरता है। तो वो अपने पार्टीशन से और तमस से क्या आपका जो संबंध रहा है एक साहित्यिक कृति को लेकर के, उसके बारे में कुछ आप हमें बताएं। Tamas was a book which I noticed at the top shelf of a book in Delhi. There was a bookshop in Sri Ram Center. Yes. जी. उसमें. So I saw it there, and I just felt good about the title. Just that. तो मैंने कहा यार दिखाओ जरा, तो मैंने पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे लगा कि this is about partition. I took the book. At that time, I was also shooting Gandhi. I was part of the shooting team. For a few days, I could not read it. But once I started reading it, I couldn't put it down. What I remember most about that book was it was written in such simple language. And somehow or other, जो कुछ भी लिखा गया, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सचमुच ऐसा ही हुआ होगा. I did not have any questions. मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कहानी पढ़ रहा हूँ. I just read it. And when I read it, and I said, this is the book. By that time, because I was in cinema, and I was a cameraman at that time, shooting Gandhi, I said, this is the book that I would like to make it. And the first person I asked about this was the director of Gandhi. Richard Attenborough. Yes. So I told him, I have read a book, and which is very nice. इसमें English characters भी हैं और Hindi, Indian characters are also there, Muslim characters are also there. It's a very good book. He said, okay. I said, I would like you to consider this. He said, okay, when you're ready to show it to me, because it's a Hindi language, you tell me. If I'm ready, if I'm around, I will do it with you. So that gave me a little, encouragement. गोविंद जी, एक चीज़ मुझे और बड़ा एक इसमें खुश इत्तेफाक ये लग रहा है कि एज द हेड ऑफ द सेकेंड यूनिट
the partition scenes and the riot scenes were being done by you. Yes, because So उसी समय जब आप वो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन के सारे सीन्स जब आप शूट कर रहे थे गांधी के लिए, उसी समय एक किताब आपके हाथ में लगती है, आने जाने वाली किताब, जहाँ की कि 1.5 करोड़ लोग यहाँ से जाएंगे और 1.5 करोड़ 75 लाख यहाँ से जाएंगे, 75 लाख वहाँ से आएंगे. Gandhi was very ambitiously mounted. Yes. And it was not done by only one unit. Director was one, Richard Attenborough. But some parts were given away to other. And the part that I did was the second unit director and cameraman. I was the director and the cameraman. So when I started working on it, it was a very different experience because Richard Attenborough said, I went to him and I said, how would you like me to approach as a director? How do you want me to shoot? Do you have any idea? He said, no. You have read the script? I said, yes. He said, do it the best that you can do. क्या ट्रस्ट है, देखिए आप पहले चुन लो सही आदमी, फिर ट्रस्ट करो. Yeah. So this expression of confidentiality, he felt that I could take on the mantle of director at that time because I was the second unit director and the cameraman. He said, go ahead and do it. You don't have to come and ask me every time. So I kept quiet, thank you, and I just went on. Whatever I could think of, I went on doing because I had the full support of Richard Attenborough. That makes a lot of difference when you're working in a unit and the director gives you so much confidence that you can go ahead and do it. And I did it that way. They did not ask me any other things. The only thing I remember at that time, I got the kind of a call to say, go easy on the raw stock. I was apparently using अच्छा, गोविंद जी by the lot way of raw was stock. known for taking many takes. Even in his own production films, he takes many takes. So तो ऐसा नहीं था that's कि दूसरे का अंग्रेज का इसलिए उड़ाओ. जब खुद भी शूट करते हैं तब भी काफी शूट करते हैं. beyond that, no other remark was there from there. They're very happy whatever the rushes they shot. Whatever I had shot, the rushes, they were also shown to them. And they were happy, and we just carried on. So that was a very, 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 very important experience for me. गोविंद जी, जहाँ पुस्तकों को सिनेमा में लाने का सवाल है, आपने बहुत जल्दी ही, मतलब आक्रोश तो बिल्कुल विजय तेंदुलकर साहब की लिखी हुई कहानी थी. और मुझे याद है कि जब 1980 या 81 के फिल्म फेस्टिवल में दिल्ली में मैंने पहली बार देखी थी जब वो पिक्चर, तो ऐसा लगा था कि जैसे किसी ने मुंह पे कांच की बोतल फोड़ दी है, जैसे नहीं कोई आके बियर की बोतल फोड़ ही दे सर पे, तो इस तरह की फीलिंग हुई थी. तो वो तो ओरिजिनल स्क्रीन प्ले लिखा था आदरणीय विजय तेंदुलकर साहब ने, लेकिन उसके बाद से आपके चाहे अर्धसत्य हो, वो भी SD पनवलकर की कहानी सूर्या पे आधारित थी. हाँ. मराठी से आपने कई चीज़ें ली हैं अपने जीवन में. बंगाली का उपन्यास महाश्वेता देवी जी का 1084 की माँ, आपने जिस तरह से लेकर के उसको फिल्म में उतारा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है. कुछ आप महाश्वेता जी से अपने संबंधों के बारे में और उस उपन्यास के बारे में कुछ याद करेंगे, 1084 की माँ के बारे में. You see, जी. right from the beginning, as I told you, I developed fondness for a strong drama. As I told you, with my original
interaction with Mahabharata, which I thought was very drama. उसको पता नहीं था ये ड्रामा क्या होता है कुछ, but there was something about it जो हो रहा था वो बहुत अच्छा लगता था. So I never approached anything कि ये अब सिनेमा है, इसको मुझे कन्वर्ट अपना, और ये किताब है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है. I never thought it that way. I looked at books as a source of material. मैं ये नहीं सोचता था कि किताब है और मुझे उसको सिनेमा बनाना है, नहीं. ये किताब है, ये कहानी है, इसको मुझे बनाना है. I just thought of that way. I did not say मैं भी इसका सिनेमा क्रिएट करूँगा, कुछ नहीं. ये कहानी है, मुझे अच्छी लगती है, बनाते हैं. And that's how it happened. मैं इस थियरी में पढ़ाई नहीं. So whenever I got a book and I wanted to convert it into a film, I thought important thing is to read the book very, very carefully. Everything is there. All you have to see is कि मेरी नज़र में क्या आया, वो सब किताब में ही है, किताब में ही पढ़ी है. अगर उनको पढ़ने से things start hitting you, and that's the kind of interaction I went through, and I found it very, क्या चाहते हैं कि जिसको पढ़ने के से मज़ा आता है, जिसमें हमको एक्साइटमेंट होता है. तो मुझे किताब को कन्वर्ट करना या न करना पड़ना वो सवाल नहीं हुआ. दिस इज द स्टोरी, आई हैव टू मेक इट, ख़त्म. सिनेमा है या क्या है, कुछ भी नहीं. तो आई डिड नॉट गो थ्रू दिस, ये स्टोरी है, इसको मुझे सिनेमा में कन्वर्ट करना है, मुझे ये करना होगा, वो करना होता, कुछ नहीं. जस्ट गो फॉर द असेंस. दैट्स हाउ आई थॉट. किताब को बाइबल समझ के काम किया. बिल्कुल बिल्कुल. Even today, my attitude towards the book has not changed, and my attitude towards cinema has also not changed. So, see, the point is, book is, उसमें बहुत गहराई होती है. आपके नज़र के ऊपर है, आपकी बुद्धि के ऊपर है, उसमें से आप क्या क्या ग्रहण करते हो. That's all. That's how I approach. जी गोविंद जी, आपका मराठी नाट्य साहित्य से और मराठी नाटककारों से और महाराष्ट्र के नाटक करने वालों से बहुत एक गहरा संबंध रहा है. और फिर सत्यदेव दुबे जैसा एक व्यक्ति, नाटक में रचा बसा हुआ व्यक्ति, वो भी आपके बहुत करीब रहा है. सड़क के एक तरफ आप रहते थे, सड़क के दूसरी तरफ वो रहते थे, लेकिन दोनों एक ही तरफ पाए जाते थे, कहीं ना कहीं अक्सर साथ में ही पाए जाते थे आप लोग. गिरीश कार्नाड साहब के साथ आपका बड़ा करीब का संबंध रहा, और मराठी के तमाम नाटककारों से, महेश एलकुंचवार साहब से आपका बड़ा संबंध रहा. और आपने तमाम नाटकों को भी फिल्मों में, स्टार्टिंग विथ महेश एलकुंचवार पार्टी, उसके बाद में आपने स्ट्रिनबर्ग का फादर बनाया, आपने लोरका का हाउस ऑफ बर्नाडा एल्बा बनाया, रुक्मावती की हवेली बनाई, पिता बनाया, जजीरे बनाया आपने. तो कम से कम 4-5 चीज़ें आपने नाटकों पे आधारित बनाई हैं, नाट्य साहित्य पे आधारित बनाई है. तो क्या आपको लगता है कि नाट्य साहित्य को सिनेमा में लाना आसान होता है, या उपन्यास को लाना आसान होता है, या क्या आप कैसे देखते हैं उसको? क्योंकि नाट्य का कहीं ना कहीं डीएनए काफ़ी फिल्म के करीब ऑलरेडी पहुंचा हुआ होता है, इसलिए. जी. But that, I must say, my association with Satyadev Dubey was a great blessing on me. You know, his thinking about cinema and natya was quite, you know, mixed up in a very positive way. And therefore,
मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये एक सिनेमा है और ये नाटक है. I always treated it, what is the essence of what I am reading. And I always went for that. And I must remember one more thing. Working with Dubey ji and then working with Tendulkar Sahab, it was double blessings for me. And my reaction with Tendulkar Sahab and coming together with his work, which was in Marathi. And I started reading Marathi and learning Marathi. And I learned quite well. I'm not very well at Marathi, but I learned quite well. But the fact is, the combination of writer-director like Satyadev Dubey, and then you have a writer who was also, in a way, associated with films, Vijay Tendulkar. That combination, I think, was a great blessing for me. And I'm very grateful that Tendulkar also, we developed a very good friendship. And up to the last moment that we were together, because Tendulkar left us very early, I got quite a bit from Tendulkar. His thinking about drama, about writing even the screenplay, because there were some things we were working together, and he could participate on that also, with me and Tendulkar working together. And I have not yet made that film. I hope that I will soon get a chance to do that. But excellent. I don't think I could have learned so much without any other teacher. So the combination of Satyadev Dubey, Vijay Tendulkar, fantastic. And the person who wrote the story of अर्धसत्य महेश कुंचवार also. जी. But this group of people, very exciting, because their thinking was very broad. They were not very संकीर्ण बुद्धि नहीं थी. एक और प्लेराइट से आपका बड़ा संबंध रहा है, मंजुला पद्मनाभन भी is basically a playwright. Absolutely. So I must pay my full respect to people like Tendulkar, Satyadev Dubey, Mahesh Kunchwar and others, writers. The writers, I think, have contributed to my thinking in a very major way. मैं एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से कि जिस तरह की दोस्ती थी आदरणीय सत्यदेव दुबे जी से और गोविंद जी की, कि वो कोई भी विषय ऐसा है जिसमें दुबे जी नहीं भी जुड़े हुए हैं लेकिन उनको बुला लेंगे. और दुबे जी ऐसे व्यक्ति होते थे कि वो एक अच्छी खासी आपने सजा ली है, टेबल कांच की रख दी, वो लाके पत्थर मार देंगे इस पर. वो किसी भी बनी बनाई चीज़ पे पत्थर मार सकते थे. अब आपको दोबारा बनानी होती थी, लेकिन उसमें जो चीज़ उभर के आती थी वो एक नई चीज़ होती थी. तो ये जो ऐसे एक व्यक्ति का पास में होना निंदक नहीं राखिए,
और आंगन कुट्टी छवाए वाली बात जो थी उनके साथ में, कि उनका जैसा निंदक जो हर चीज़ की निंदा की क्षमता रखता था, जो आपको लगने लगता था बिल्कुल परफेक्ट है, उसको भी आकर के वो ब्रेक कर सकते थे दुबे जी, और उसमें आपको नया सोचने के बहुत सारे आयाम जिस तरह से मैंने एक ही फिल्म मैंने डायलॉग लिखे हैं गोविंद जी के साथ में, द्रोह काल नाम की फिल्म का, और उसमें भी मुझे याद है कि कहीं कहीं जहाँ हम लोग फंसते थे कि अब क्या करें, इसको कहाँ ले जाएं, वहाँ पे कभी कभी जब बुलाते थे आप I tell you one thing. One day we were discussing, Dubey ji and I myself, अकेले घर में थे, and बात ही चल रही थी, तो it was title, एक title. I was working on the film, and Dubey ji knew that we were working because we used to work quite together. The title, Ardha Satya, was given to me by Dubey ji. He charged me 500 rupees on that. Yeah, ऐसा suggestion लेके तो ऐसे मुफ्त में नहीं मिला था. I paid him 500 rupees. And he gave me Ardha Satya. This is your title. Now, I said nothing because I liked the title very much. I said done. 500 रुपये निकाल के दी. और मित्रों एक और मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊं कि मराठी से जिस तरह की उनसियत, जिस तरह की मोहब्बत पूरे साहित्य को लेकर के, नाट्य साहित्य को लेकर के गोविंद जी की रही है, कि गोविंद जी की जो लेटेस्ट फिल्म है वो भी मराठी में है, हिंदी में नहीं है, जिसका नाम आपने शायद सुना होगा, ती आणी इतर. ती आणी इतर. और वो जो है वो मराठी में आपकी लेटेस्ट फिल्म है, ती आणी इतर, तू और दूसरे. तो इतर तो हो गए. और मज़े की बात यह है कि ये दो जो मित्र हैं, साथी हैं, और ये जो दो, क्या कहूँ इनको मैं, जोड़ीदार जो हैं, कि इनकी आखिरी फिल्म मराठी में है अभी तक, आज तक की, और श्याम बेनेगल जी की आखिरी फिल्म बंगाली में है. तो इस समय ये देखिए कि दोनों लोग ज़िंदगी भर हिंदी की फिल्में बनाने के बाद में कैसे अब एक अलग अलग भाषाओं में भी अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है. ये मेरे ख्याल से सचमुच एक ऐसा कमाल का बात है कि ये दोनों फिल्म मेकर्स अभी भी लगे हुए हैं अपनी फिजिकल सब चैलेंजेस से लड़ते हुए भी, और अभी बना रहे हैं, और अलग भाषाओं में फिल्म बना रहे हैं, और अलग भाषाओं में उसको देख रहे हैं या देखने जा रहे हैं, जो भी है. अभी सन 22 में ही आपकी फिल्म आई जिसकी ती आणी इतर का, जिसे मैंने जिक्र किया, और सन 23 में अब बेनेगल साहब की फिल्म आने जा रही है बंगाली में. मित्रों मुझे पता है कि समय बहुत कम है, आधे घंटे का ही समय हम लोगों को अलॉटेड था. अगर किसी की कोई प्रश्न हो, कोई और बातें हो, बातें तो बहुत हैं, अभी चल सकती हैं हम लोगों की बातें, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि सेशंस ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हैं, और मैं देख रहा हूँ कि सौरभ जी आ चुके हैं, शुक्ला जी बैठे हुए हैं और देख रहे हैं हमारी तरफ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इनका सेशन भी लेट हो. तो बगल में अतुल जी भी नज़र आ रहे हैं मुझे, अपने हम नाम. तो किसी के कोई प्रश्न हैं कोई? जी गोविंद जी, डायरेक्टर्स में से किसने किसने आपको प्रभावित किया? डायरेक्टर्स में से, फिल्म डायरेक्टर्स में से किसने किसने आपको प्रभावित किया था? हिंदी में या इंडियन डायरेक्टर्स में सत्यजीत रे. यस, दैट वाज very very strong influence. Yes. And if I have to go abroad तो उसमें तो काफ़ी है. और सिनेमाटोग्राफी में पूछ रहे हैं, सिनेमाटोग्राफर्स में से कौन कौन? सिनेमाटोग्राफर्स में the person who photographed the films of Satyajit Ray. Is very good. और दूसरा जो है, गोविंद जी नाम शायद नहीं ले रहे हैं, और आज पहले
अशोक जी का कहना था कि 22 को रखेंगे सेशन, लेकिन 21 को इसलिए रखना पड़ा है कि कल ही गोविंद जी बैंगलोर जा रहे हैं। इनके जो गुरु थे वी के मूर्ति जिन्होंने सारी फिल्में गुरुदत्त साहब की शूट की हैं और एक नए आयाम ही स्थापित कर दिए उन्होंने अपने कॉम्पोजिशंस में, अपनी लाइटिंग्स में। वो चाहे प्यासा आपने देखी हो, चाहे कागज़ के फूल देखी हो, और चाहे बाकी सारी फिल्में देखी हों, उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम 3 दिन का बैंगलोर में हो रहा है। बैंगलोर के ही सिनेमा स्कूल से गोविंद जी ने अपनी शिक्षा भी ली थी, वहीं के पॉलिटेक्निक से, जो अब तो राजकीय फिल्म विद्यालय बन गया है वहाँ पे। और वहाँ पे जो वी.के. मूर्ति साहब की स्मृति में कार्यक्रम है और वहीं जा रहे हैं। और वी.के. मूर्ति साहब के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग साथ में थे और वी.के. मूर्ति साहब की बातें कर रहे थे। और एक बात गोविंद जी ने आज कही थी अभी थोड़ी देर पहले कि अब जब मैं दोबारा पलट के वो सारी फिल्में देख रहा हूँ वी.के. मूर्ति जी की, और जिसमें गुरुदत्त की और उनके साथियों की, उनके लेखकों की फिल्में शामिल हैं, तो कहने लगे एक चीज़ मुझे नज़र आती है जो आज के सिनेमा में नहीं दिखती है, वो है ईमानदारी। आपने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी जी, ज़रा बताएं इस पर गोविंद जी। इस पर कुछ बोलना चाहेंगे गोविंद जी आप? मूर्ति साहब के साथ, ज़रा माइक पास ले लीजिए। मूर्ति साहब के साथ एक चीज़ ये थी, वो he was not, as far as I am concerned, he came from the same school that I learned cinematography from, Sri Jayacham Rajendra Polytechnic in Bangalore. Now, he was not, Murthy Sahab was not just a teacher. He was what I call a guru. The difference between the teacher and guru, in my mind, was always that teacher is very important because he gives you very, very good direction in any subject that you give. But a guru also not just gives you teachings in a subject, but also it gives you some direction to your life. It's the higher thinking that goes behind any teaching. It gives you a direction to your life, to your values, values of truth, values of honesty, values of respect for the audience, for the teachers and elders. That the difference between the teacher and the guru, when you're from teacher, is very important. But if you go beyond that, there's somebody who gives you the principles to follow. Simple things like just one thing, the truth, honesty, they are very important. And this, whenever somebody gives you, he becomes guru. So Murthy Sahab, for me, V.K. Murthy was my guru. Up to now, I respect him for that. I was lucky to be blessed by him.